ट्रेन में ये होता है क्या कि ट्रेन में सर तुम रॉन्ग नहीं करता सही 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 ट्रेन में ये होता है क्या कि ट्रेन में पहले महिलाओं को काम करने की परमिशन नहीं और जहाँ पर महिलाओं को काम करने का परमिशन नहीं होता वहाँ पर महिलाओं को राइट्स भी बहुत कम है राइट्स क्रिएट करता है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी तब आप पॉलिटिकल राइट्स एंड अदर राइट्स डिमांड करते हैं वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 करोड़ पीपल है इन यूरोप तो ये सब तो मेल थे तो डेमोग्राफी चेंज हो अब इंडस्ट्रियल लेबर में डिमांड बढ़ गई तो महिलाएं भी काम करने लगी तो जब वुमेन काम करने लगे पैसा कमाने लगी तो कहा कि हमें राइट्स क्यों नहीं तो उसके बाद उनको वोटिंग राइट दिया उसके बाद अदर फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे यूरोप तो दैट वाज मेकिंग द मेनी men to have war far away from England also. The conquest में एक अच्छा economic support, family support, they became free from the task of production, so they can join the suit. Pretty or cheap game. Cultivation was, cotton cultivation was. An intensive process, labor intensive process. घर में बैठा इम्पेशेंट हो जाता है कि they had large amount of land. There were 2 types of problem they were facing. First, इस रिवोल्ट का टारगेट ब्रिटिश नहीं है जो लैंड रेवेन्यू लेगी इस रिवोल्ट का टारगेट ये सेठ महाजन साहूकार उस रिवोल्ट में किसान उसके घर में चला गया और आराम से बोला लॉकर खोलो बहुत सारी चीज होती थी लॉकर इंसान कुछ नहीं देते वो बॉन्ड पेपर निकाले जिस पर उसका अंगूठा करते और उसको वही जला दे और फिर उससे पूछता था सेठ महाजन साहूकार से तुम्हारा पैसा भी बाकी है हमारे पास तो बोलता था उस चले हुए पेपर को देख के बोलता था कि नहीं पैसा नहीं बाकी तो जो बॉन्ड पेपर होता था दैट वाज अ लीगल डॉक्यूमेंट बाय व्हिच दे फोर्स्ड पीजेंट टू सेल द लैंड इन अ वेरी ऑर्डर एंड देयरफॉर फ्रॉम पीजेंट दे बिकेम लैंडलेस सो अल्टीमेटली द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैड अ डिजास्टर्स आप यहाँ तो सुनिए गांधी जी ने इंडिगो में नील सत्याग्रह किया था पढ़ाएंगे चंपारण सत्याग्रह That was another level of sin force commerce. तो बाद में 1879 British government had passed a law. Taken agriculturist relief act, and thereafter increased reach of land revenue was there. यहाँ से ये land revenue को वापस लिया। समझा कि ये हम लोगों ने negative impact of British economic policies देश को किया। So commercialization intensively was to benefit the British economy. Peasants hardly getting any benefit. ये जो बेचता था ना मिडिल मैन के थ्रू बेचता था तो ज्यादा प्रॉफिट ब्रिटिश ने लिया उसके बाद मिडिल मैन ने लिया पीजेंट को चॉकलेट टॉफी ही मिल पाता था जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते तो इट वाज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल टू द पीजेंट मिशन अलग है 20th सेंचुरी का है ये तो 19th सेंचुरी में कर रहे हैं 1875 में ठीक है तो इधर देख ये आर्टिफिशियल कलर हो गया ना तो 1915 के आसपास आर्टिफिशियल कलर की डिस्कवरी हुई लोगों ने बोला इंडिगो अब खरीदता नहीं कोई कल्टीवेट नहीं करे तो ब्रिटिश तो इस पर एक्स्ट्रा टैक्स ले रही है इस कहता है कि करना ना करना तुम्हारा काम अगर टैक्स लेते नहीं एक्स्ट्रा किसी को फोर्स कर दिया किसान बोलता है जब बिक नहीं रहा है तो हम नहीं करेंगे बोला कि करना ना करना तुम्हारा काम है हम एक्स्ट्रा टैक्स जो है उस पर कॉमर्शियल प्रॉपर हो लेते हैं ये मेन रीजन था जो बाद में इंडिगो रिपोर्ट हेडिंग दे दीजिए नेचर ऑफ कॉमर्शियल नेचर ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन two types of cultivation in Deccan there were two types of cultivation in Deccan British planters themselves became cultivator. They employed large number of peasants.
cultivate cotton. American plantation system. Like American plantation system. System. Second, individual peasant also motivated by, were also individual peasant was also motivated by demand and profit margin. Therefore, large part of the land, was used for cotton cultivation. There was cotton boom in Deccan. Cotton boom under Kogi. There was cotton boom in Deccan. तो इस तरह से पूरे डेक्कन में केवल कॉटन ही दिखे. प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स थे. Peasants were facing two types of problems. First point. Problem of investment. No cooperative societies and state banking system. There was no cooperative societies and state banking system. Peasants were money from private money lenders, borrowing money from private money lenders. Peasants were borrowing money from private money lenders. The process of giving the loan was impression on plain sheet of paper. Thumb impression on plain sheet of paper. The process of giving the loan was impression on plain sheet of paper. Thumb impression on plain sheet of paper. It's high rate of interest. There was high rate of interest. Second point. Government had increased the rate of land revenue. Areas under cotton cultivation. On the areas under cotton cultivation. It had increased the rate of land revenue. Areas under cotton. British government had increased the rate of land revenue. Areas under cotton cultivation. On the areas under cotton cultivation. On the areas under cotton cultivation. ठीक है, और पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि despite these two problems, margin was so high, profit margin was so high. और पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि despite these two problems, margin was so high, profit margin was so high. Agents were able to save the profit.
margin was so high, agents were able to save the profit. Were able to save the profit. Initially, commercialization of agriculture highly beneficial to peasant. Initially, the commercialization of agriculture was highly beneficial to peasant. ठीक है, अब रियल प्रॉब्लम आएगा कल आएगा. ठीक है, आप लोग आराम से अगर निकलूंगा तो निकलो, ऑनलाइन बच्चे से बात करो, इससे में बैठा हूँ. ठीक है, अब रियल the commercialization of agriculture was highly beneficial to peasant. Initially, the commercialization of agriculture was highly beneficial to peasant. ठीक है, अब रियल प्रॉब्लम आएगा कल आएगा. ठीक है, आप लोग आराम से अगर निकलूंगा तो निकलो, ऑनलाइन बच्चे से बात करो, इससे में बैठा हूँ. जल्दी से आ जाओ. अमरजीत, सरगम, मोहम्मद. ठीक है, beneficial to peasant. Beneficial to peasant. Commerce agents were able to save the profit. Initially, commercialization of agriculture highly beneficial to peasant. Initially, the commercialization of agriculture was highly beneficial to peasant. ठीक है, अब रियल प्रॉब्लम आएगा कल आएगा. ठीक है, आप लोग आराम से अगर निकलूंगा तो निकलो, ऑनलाइन बच्चों से बात करो, इससे में बैठा हूँ. जल्दी से आ जाओ. अमरजीत, सरगम, मोहम्मद अली, बाबू, सब जल्दी से आ जाओ. जी बताइए क्या क्वेश्चंस अपने प्लेस करते रहिए. वो ले रहे हैं इंडियंस. Initially, it was very beneficial to the peasant. Initially, it was very beneficial to peasant. Sir, history NCERT are available to the pages online portal. I am not able to figure out as to whether these are the new ones or the old ones. हिस्ट्री एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है. ठीक है, न्यू एनसीईआरटी. आप ओल्ड खरीद लीजिएगा, ओल्ड कुछ भी ओल्ड खरीद लो. Second, what happened if besides bond paper farmer refused to pay as there were no courts? Actually, local jamindar and money lenders, they use the local power structure also. They use the gundas and others to pressurize the peasant. लीगल कोर्ट तो था ही. 1800 में तो लीगल कोर्ट आ ही गया था. लीगल कोर्ट आ गया था 1860 1800 के आसपास तो शानदार कोर्ट एस्टैब्लिश हो गए. स्पेक्ट्रम से कौन सा चैप्टर पढ़े गए? उस स्पेक्ट्रम से पढ़े गांधी का चैप्टर. मैं तुमको इस चैप्टर का नाम मार्क कर दूंगा. रुको, मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है? आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब. डेथ ऑफ औरंगजेब. बिपिन चंद्र की किताब लेनी है. बिपिन चंद्र की किताब लेनी है. ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्र की किताब मोटी वाली, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. चंद्र पूरा पढ़ो. Why Maratha power lost? Kalam from there. Yeah? Okay. एकदम हाई क्लास. तो शुरू कर दे. क्या चल रहा था? साइट जीनियस सोसाइटी है, इगलिटरियन सोसाइटी है, एंड देयर इज नो सोशल एविल्स. It was evil-free society. So, evil-free society means no caste system,
polygamy, child marriage, no child marriage, no sati, no rituals, no idol worship. आइडल वर्शिप को भी ये लोग एविल्स मानते हैं एंड ऑब्वियसली नो अनटचेबिलिटी. There is no such thing existed in the Rig Vedic society. Untouchability. It was ideal society. It was ideal society. Vedic society was an ideal society. No idol worship, no untouchability, no untouchability, no rituals, no sati, no child marriage, no polygamy, no caste system. So it was ideal society. Okay. Varna जो था वो exist करता था. Varna was based on karma, right? So Burn was not rigid and there was inter-Burn mobility. मैं लिखा था कभी. Position of women. किसी भी सोसाइटी का क्या स्टेटस है ये इस बात से ही डिटरमाइन होता है कि what is the status of women. So Rig Vedic society, it had condition of women was respectable. The society was patriarchal. Condition of women was respected. Although society was patriarchal, but women had the property right. Right? Women had the property right. Although society was patriarchal, but women had the property right. इसका मतलब समझ में आया आपको कि rights and obligation will be transferred from father to son. Rights and obligation will be transferred from father to son. Rights and obligation will be transferred from father to son. But women had property right. So society was patriarchal, but women had property right. Women had political right. This right to vote, election of king, to vote in election of king.